Good morning, all of you. Are you able to hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, aldehydes, ketones, have I started with you? Yes, ma'am. Okay, what is the last thing I've done? Partial reduction of esters. Rosamond reaction. Okay, Rosenthal reduction. Esters का भी किया मैंने? Yes, Partial ma'am. reduction. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Dival H. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. That was what number? Reaction? What number? I'm eighth reaction. 8. Okay, so I have to start with 9th. I have to start with 8th or 9th? 9th. Okay. Next, you write on oxo process. Now, in this reaction, an alkene is treated with a mixture of carbon monoxide and hydrogen. This mixture of CO and hydrogen is known as what? It is known as water gas. Producer gas भी बोलते हैं इसको. Reaction is carried out in presence of this complex, which acts as a catalyst. What is the name of this complex? Cobalt carbonate. Cobalt Tetracarbonyl cobalt. tetracarbonyl. Cobalt 0, correct? Yes, Yes, ma'am. You get the formation of an aldehyde here. In fact, you get two aldehydes, a mixture of two aldehydes, with the straight chain being the major product. What is the coordination number of cobalt here? 4. 4. So this temporarily does what? It breaks the hydrogen-hydrogen bond. Heterolytic. H minus is taken into the coordination sphere. So H minus enters as a ligand here, giving you this is understood. Yes, ma'am. Now the next thing which happens is H plus attacks carbon monoxide. This is the Lewis structure of carbon monoxide. Tell me where would H plus attack? Oxygen. Carbon. Yes, carbon. Oxygen is still positively charged. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Resonance में ये pi electrons इस पे shift हो सकते हैं. Yes. These are the two resonating forms. Which is more stable of these two? First one. Yes. Can I say octet There is is no something? reaction. Octet of carbon is something. So which is the reactive form? Second one. Second one. So this will react with the alkene. This acts as an electrophile. Pi bond will preferably shift which side? Right or left? Right. Right. Yes. तो major वो होगा जो right में shift होगा. Electrophile will attack here, giving you a carbocation. This is understood? Yes, ma'am. The other possibility is the shifting of pi bond on the other side. Sorry. So electrophile will attack that carbon, giving you this primary carbocation. This is going to be formed in major amounts. This will then react with the H2. complex. Okay. Complex had taken away what? H plus. No, it had taken H H minus. H. minus लिया था ना, hydride लिया Yes, था. ma'am.
तो अब हाइड्राइड वापस देगी. Understood? Yes, ma'am. This also would react, giving you the minor product. मेरे रिएजेंट को कुछ बोलता है. Good. हो गया ये? Devika, no special name. This is tetracarbonyl cobalt with oxidation number is 0. मैम लास्ट स्टेप आप रिपीट कर सकते हो क्या हो रहा है? लास्ट स्टेप में खाली वो जो हाइड्राइड लेके गया था ना जो कॉम्प्लेक्स, हाँ। that comes and gives back the hydride. ओके मैम. Finished? Done, ma'am. Ma'am, the second one in the resonating form is less stable now. Yeah, because octet incomplete है ना ये. मैम बताओगे ये मेजर क्यों है ये वाला? क्योंकि कार्बोकैटायन ये बनेगा ना प्रेफरेबली 2 डिग्री over 1 डिग्री. यस मैम. Done, ma'am. Finished? Yes, ma'am. यस मैम. Next is Wacker process. Again here, this is used for the manufacture of acetaldehyde from ethene. Acetaldehyde first undergoes oxidation. The catalyst being CuCl2 and palladium chloride. So this is first oxidized to alcohol. Alcohol से further oxidation होकर it will give you aldehyde. Mechanism of this reaction is still under debate. Okay, so they have not given the exact mechanism of this process. Next is preparation of aromatic aldehydes.
Under this, I have already done Gatterman-Koch reaction. Do you remember? Yes, ma'am. I have done Gatterman aldehyde synthesis. I have done Riemer-Tiemann reaction. मैम किसमें किया ये? इसमें किया है रिएक्शन मैकेनिज्म। ये दोनों मैंने एरोमेटिक में किया था. अच्छा Yes, ma'am. Last वाला halide. Halides. हाँ यार Alkyl and aryl halides. Finished? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then the next one is ETAD oxidation. This I haven't done. ETAD oxidation. Toluene here is oxidized to benzaldehyde. In this reaction, toluene is oxidized to benzaldehyde using CrO2Cl2. What is this compound called as? Yes, Rohan, just give me a few moments. I'll just. What is this reagent? CrO2Cl2. It is known as chromyl chloride. Chromyl chloride. Rohan, this is the previous page. In this also the mechanism, they have just isolated one intermediate which I'm giving you. When this reacts with chromyl chloride, get this intermediate. इसके 2 moles लगेंगे. Now this with HCl, it undergoes hydrolysis. ये part पूरा break हो जाता है. You get OH here. This won't be stable, correct? Yes, ma'am. इसका dehydration हो जाएगा and you'll get aldehyde. The structure of this complex is very important. You should know the structure. मैम आप वो कॉम्प्लेक्स तक पहुंचे कैसे? That mechanism is still not given. That's what I said. ओके मैम. They have just isolated this complex. Okay? Complex का भी कुछ नाम नहीं है. नहीं. Okay, ma'am. मैम हेडिंग का नाम क्या है? ETAD oxidation. Ma'am, could you explain the third last step in mechanism before adding it?
Before adding HCl. Yes. Before adding HCl, just this complex has been, they have isolated this complex. How this complex has been formed, that is not given yet. Okay, ma'am. Thank you. मैम इसमें HCl के यूज करते हैं, why not H2SO4? You can use any acid last step. Okay, ma'am. Might be it is possible that it would go through some transition state. That is what can happen. You have this. So now what can happen is this CH bond can break. इसमें ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा वाला? क्रोमियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन का। ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा यहाँ पर बिटवीन ऑक्सीजन एंड व्हाट यू से कार्बन। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, समझा? Yes, ma'am. तो जब ये ब्रेक होगा, ये वाला ब्रेक होगा तो ये CH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, करेक्ट? Yes, ma'am. ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो ये OH हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये भी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। Should we copy it? नहीं नहीं नहीं, दिस इज जस्ट माय assumption. Yes. Yes, Amog, still the formation of the complex is not yet known. How it is formed. How many years? Even I have studied this reaction, so you can imagine. This is what I could think of. Okay. I don't know what exactly is the mechanism. Fine. Can I proceed ahead? Yes, ma'am. Okay. Now last one is, I think 11th, no? 12. 12th. Formation of aromatic ketones. Under this, you have Friedel-Crafts acylation, which I have already done. So I won't be repeating it here. Okay. Friedel-Crafts acylation. So I'm done with the preparation methods. Now proceeding towards the chemical properties. So reactions of aldehydes and ketones. Under formation of aromatic ketones, only Friedel-Crafts acylation is there. Yes, yes. Okay, miss. Can I start with the reactions?
Yes, ma'am. Write down the product. Write down the products. Did you finish? 1 minute, ma'am.
Have you all finished? Done, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. यहाँ पर क्या मिलेगा? 1 degree alcohol. Alcohol. 2 degree alcohol. Alkane. ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं? Clemenson's Clemenson's reduction. reduction. Clemens. और इसको Wolff-Kishner reduction. all of you have written this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. CH2. हाँ, RCH. What if I use HI and red phosphorus? HI and red phosphorus is the strongest reducing agent. Alkane. Yeah, it reduces all the functional groups to alkane. Sir, can you, ma'am, can you show previous page? Sorry. Thank you, ma'am. What if you use a ketone to which you add magnesium amalgam? What product do we get here? Alcohol. We get this. ये क्या है? Glycol. Phenol. Glycol. Yes. Phenol. Formation of phenol, I have done it. Yes, ma'am. So now these were all reduction. The next is oxidation. What product would that give? Carboxylase. Acid. Ketones, it is difficult to oxidize, correct? Because of the strong CC bond. CC bond ज़्यादा strong है ना? Yes, ma'am. यहाँ पे ये CH bond जल्दी break हो जाता है, but CC bond is very strong. So strong oxidation of this will give you what? कौन सा bond break होगा? ये वाला या ये CH वाला? bond break होगा. Right वाला? वाला. हाँ. कौन से rule के हिसाब से? Anti-Marconi. Pops. Popov's rule. Anti-Markovnikov इधर किधर? Anti-Markovnikov addition reaction में होता है. HBr के addition में alkene. ये Popov's rule करवाया था ना मैंने? याद है कि नहीं? Yes. Yes, ma'am. इसका क्या था? During the oxidation of unsymmetrical ketone, the ketonic group is retained with the smaller alkyl group. Alcohols में किया था मैंने. CC bond break करके OH डालना है. ऊपर वाले. What did you say? वो CC bond break करके OH डालना है ना. हाँ, इधर भी OH, इधर भी OH. कहना से यह अल्कोहल हो जाएगा फिर. Yes, ma'am. फिर अल्कोहल फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा.
acid में. Okay, ma'am. Did you get the answer for the next one? ये कौन सा reaction है? They can also write this as NaOI. Interstill. नहीं, ये पहली बार 1 दिख रहा minute, है? ma'am. हाँ बोलो. आया कुछ? Ma'am, haloform reaction है क्या? हाँ, हेलोफॉर्म रिएक्शन मिथाइल कीटो वाले देते हैं. मतलब मैम ये आइडोफॉर्म होगा ना? हाँ, ये पार्ट आयोडोफॉर्म हो जाएगा, CHI3 येलो पीपीटी आएगा इसका. और ये पार्ट क्या हो जाएगा? Acid. एसिड Acid. बनेगा. सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा ना. सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. आया कि नहीं याद अभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Compounds having methyl keto group only will give this test, correct? Yes, ma'am. Did you write this? Done, ma'am. Yes, ma'am. Next is oxidation using Tollens reagent. You know what is Tollens reagent? Ammonical silver nitrate. Yes. Ma'am, this is the third point, right? These are all oxidation reactions. Okay. Under oxidation only you'll write. Now Tollens reagent oxidizes aldehydes to carboxylic acid. Okay. And in doing so, the silver is reduced to metallic silver. What is the oxidation number of silver in the complex? +1 है. Plus Ma'am, +1. Changing into? 0. 0. So can I say silver is getting reduced? Yes, Yes, ma'am. ma'am. And aldehyde gets oxidized. Now when this reaction is carried out in a test tube, all the silver which is formed here in the reaction, that sticks to the walls of the test tube, inside walls of the test tube. And it actually, when we see the test tube, it appears to us as like we are looking in a mirror, because the silver, it will shine, correct?
Yes, ma'am. So this test is also called as silver mirror test. Silver mirror test, because silver is deposited on the walls of the test tube. Silver is deposited on the walls of the test tube. So it actually shines and it appears like a mirror. So aldehydes give a silver mirror test with ammonical silver nitrate. Ketones do not react with Tollens reagent. Tollens reagent is a mild oxidizing agent. This does not oxidize ketones. So if you want to distinguish between aldehydes and ketones, you go for this test. Got it? Yes, ma'am. Aldehydes give silver mirror test with Tollens reagent. Ketones do not. Then next is reaction with Fehling solution. Ma'am, could you show the previous Yeah, page yeah, for one Nikhil, second? Nikhil, I just read your message. Done, ma'am. Thank you. Next is reaction with Fehling solution. This is also oxidation only. सेकंड पॉइंट के अंदर ही लिखना. ये सारे ऑक्सीडेशन के अंदर ही है. ओके. Now Fehling solution बनाया जाता है. You have Fehling solution A and Fehling solution B. Fehling solution A is an aqueous solution of copper sulfate. क्या कलर होगा इसका? ब्लू. हाँ. And Fehling solution B is NaOH in Rochelle salt. Rochelle salt is sodium, potassium, tartarate. Sodium, potassium, tartarate. You have to mix these two in equal amounts to get Fehling's reagent. Mix in equal amounts. Tartarate is tartaric acid, sodium, potassium, tartaric acid ये होता है ना? This is tartaric acid. सोडियम पोटेशियम सॉल्ट मतलब एक जगह सोडियम होगा दूसरी जगह पोटेशियम. दिस इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट. Did you finish writing this? Ma'am, done. 1 minute. Okay. मैम आपने रोशेल सॉल्ट के बाद जो बोला आप रिपीट कर सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी. Rochelle salt वो पूछा था कि what is Rochelle salt? That is sodium potassium tartarate. I've written the structure of the sodium potassium. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, in the silver mirror test, Ag is reduced, no? Yeah, silver is reduced and aldehyde is oxidized. Okay, okay.
finished writing this? Just 30 seconds, ma'am. Please. Okay. Yeah. Your exams are done now? College Yes, ma'am. exams? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How are your papers? Very Good. good. Good, ma'am. Okay. Prelims would be in December? Yes, ma'am. Okay. So now what you do is this 1 month of November, you completely concentrate on your JEE mains and complete your syllabus. जो backlogs है, जो ये है, सब अभी complete करना चालू कर दो. Fine. पहले तो current topics जो चल रहे हैं, you need to complete those. Physics या maths कुछ complete हो गया? नो मैम, सबका एक एक दो चैप्टर बाकी है. अच्छा. Done, ma'am. Okay. So now I'll show you the reaction with Fehling solution. To aldehyde, when you add Fehling solution is an aqueous solution of copper ions mixed with hydroxide ion. So this is your Fehling's reagent. This oxidizes aldehyde to carboxylic acid and copper here is reduced. You get a red precipitate of cuprous oxide. Copper ka oxidation state goes from what state to what state? +2 to 1. So copper is reduced here. Vedansh, 1 month, वैसे तो 1 month नहीं बोला जाएगा because you have actually taken 2 years to do this. In fact, 1.5 years. पर अभी जो भी है, अभी जो नया syllabus चालू है, पहले वो complete करो. If time remains, then only you have to go for your पुराने जो topics हैं. But अभी जो नए topics चल रहे हैं, please concentrate on that and complete it. मैम अभी संडे को भी रहेंगे क्या लेक्चर्स? Yes, I think we need to complete now. We need to complete our syllabus by end of November. वैसे आप लोगों ने organic कितना किया है? I don't even know. I had asked you to solve halogen and alcohols, phenols. Did you all do that? नहीं Yes. किया. Alcohol. तुमने किया start? हम थोड़ा बाकी है इसका, अभी अल्टीहाइड कीटोन बाकी है. हाँ, aldehyde कीटोन तो अभी शुरू हुआ है ना. पहले वो दोनों चैप्टर कंप्लीट करो, halogen derivatives, alcohols, phenols. तुम्हारा alcohols का भी booklet थोड़ा hard है. हाँ मैम, बहुत हार्ड है. तो हम लोग को आई थिंक एडवांस वाला हाँ, तो क्या हुआ एडवांस में? बराबर सेम होता है. एडवांस का करोगे तो मेंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. करेक्ट? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट, I'll just check my schedule if I have any day to accommodate your. Y'all have lectures every day? मैम ये वीक तो संडे को भी रखा है, सिर्फ थर्सडे हॉलीडे है. अच्छा, थर्सडे ले लो. थर्सडे को कॉलेज हम थर्सडे भी थर्सडे को कॉलेज है कॉलेज संडे को. रहता है. वेडनेसडे थर्सडे कॉलेज है. कितने बजे रहता है कॉलेज? 9:30 to 3 o'clock 3:30. 3 o'clock. So can I keep it at 7:30? चलेगा मैम. यस मिस, चलेगा. तो अगर थर्सडे में 7:30 रखती हूँ, I can take it till 9. तो 1.5 hour में I think halogen Alkyl halide. derivatives, हाँ हाँ, मैम. halogen derivatives का काफी हो जाएगा डिस्कशन. मैम उससे पहले हो सकता है क्या थोड़ा? Yes, ma'am, थोड़ा early. उसके पहले मतलब? Ma'am, 5 5 o'clock. o'clock, के आसपास 5 हाँ, o'clock. 5:30 कुछ. 5 o'clock in the morning. नहीं ma'am. नो मैम, शाम को 6 बजे को. इवनिंग. Evening 5. जैसे कि 9 o'clock तो बहुत लेट हो जाएगा. No, because I am 6:30 types. नहीं, I am having a class from 6 to 8.
I'm having a Ma'am, class from morning 9:45 and onwards till 8. वही So, मैम cancel सुबह ले लो 7:30 को चलेगा। सुबह Yes, ही yes. मुझे टाइम है खाली 7:30 में। सुबह चलेगा चलो। मैम, चलेगा 7:30 को। हाँ 7:30 I can take. हाँ मैं सुबह 7:30 ले to लूँ। 9 चलेगा. So 1.5 hour I'll take and I'll try to cover as much as possible from halogen derivatives. चलेगा कौन सा डे है ये? Thursday. Thursday। मैम थर्सडे को हमको सुबह कॉलेज है 8 बजे। यस मिस। 8 बजे। हाँ मैम, मैम, ये आप कॉलेज कैंसिल वाले कर लोग दो। सुबह 8 से 3:30 तक ले लेते हैं। मैम हर ब्रांच का अलग अलग टाइम है। शाम को ही ले लो ना। नहीं but I am having class till 8. Evening 8. तो मैम चलेगा 8:30 ले लो। मैम वेनेसडे सुबह ठीक है 9 o'clock तक। तो मैम Wednesday 7:30 to 9 ले लो. एक second. Friday also I'm having from morning 7:30 to evening कॉलेज स्किप कर दे। 6. Saturday 7:30 से Wednesday. खाली Wednesday is possible for you all. नो सुबह. मैम हम लोग को कोई भी दिन चलेगा, शाम को कुछ भी चलेगा। हाँ मैं सिर्फ शाम को वेडनेसडे को शाम को हमारे क्लासेस है। अरे मेरा रोज Morning 6 से बजे Wednesday. तक लेक्चर है रोज शाम Morning Wednesday. Wednesday morning tomorrow that is. Yes ma'am. Yes, ma'am. हाँ tomorrow I can take in the morning. हम तो 7:30. मैम ले लो। हम 7:30 नहीं, थोड़ा लेट रखना प्लीज। फिर बच्चों के लेक्चर्स चालू होते हैं ना। मैम ले लो 7:30 चलेगा। मिस 3:30 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब मिस सुबह 7:30 ले लो। Borivali, what time you have college? Rohan? तो 8 o'clock something। 8 o'clock। 8 o'clock on Wednesday. या यस मैम। मैम। Yes ma'am. दादर को भी है पर हम लोग बैठते नहीं। अच्छा हम एक क्लास बंक कर देंगे चलेगा। नहीं फिर it will come on me then. Your teachers will complain. अरे नहीं सो चलता है। नहीं कोई then फर्क they नहीं will पड़ता। complain saying that NVCH ma'am is taking lectures during our किसी के नहीं पता slots. चलेगा। थोड़ा सा वो कर देंगे जो। नहीं it will come on me बहुत प्रॉब्लम हो और जाएगा। उसमें we'll have to watch the record. The only thing I can help you is you can watch the recording later. नो मिस वो बोर मारता है। नहीं फिर लेक्चर ऐसे नहीं रख सकती हूँ जब आपका लेक्चर शेड्यूल है ना तो आई कांट कीप बिकॉज देन इट विल बैकफायर ऑन मी। ओके हम फ्राइडे सैटरडे चलेगा शाम को। फ्राइडे सैटरडे रुको फ्राइडे आई एम वर्किंग टिल इवनिंग 6। मैम तो 6:30 चलेगा। 6:30 to 8. You know my timing is from 7:30 to 6. You'll get tired. So you can imagine what I'll be going through. यस मैम। Miss Sunday evening. तुम लोग का 6 hours में कंप्लीट हो जाता है मेरा नहीं होता है। मेरा it is going to 7 to 8. इतना कैसे पढ़ा 7, लेते 11.5 hours I take. हाँ हम कल 7 to 8. 8 के बाद ही चालू होगा ना कॉलेज। 7 o'clock मतलब मेरा क्लास चालू होगा 5:30 AM. मैम फ्राइडे को 7:30 का ले लो, आपका लेक्चर है वही। Because I've told you I'm staying in Abu Dhabi, no? So I'm 1.5 hour behind you. मिस्टर वापस गए। हाँ वहीं पे हूँ मैं अभी। I'll be back only after Diwali. हॉलीडेज। मैम आपके लेक्चर के दिन ले लो 7:30 को फ्राइडे। लेक्चर के दिन कभी लेक्चर तो अभी सीधा मेरा फ्राइडे को है। हाँ मैम तभी ले लो चलेगा। तो फिर मेरा अल्डिहाइड कीटोन मैम कितना बाकी है और आइडिया कीटोन का? अभी है काफी है ये बहुत बड़ा तो मैम चैप्टर 1 घंटा वो करा लो और क्या। हाँ I can do that. So 1 hour I can give for solving of booklet. Is that fine with you all then? यस मैम। Yes, ma'am. So I'll do that. Let us try this time. Again Benedict's reagent क्या होता है? You have Benedict solution A and Benedict solution B. Benedict solution A is aqueous solution of copper sulfate
and Benedict's B is NaOH. खाली रोशेल सॉल्ट की जगह इधर सोडियम पोटेशियम सिट्रेट लेते हैं, सिट्रेट सॉल्ट, सिट्रिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं. That is the only difference. The reaction is exactly the same. जो ऊपर लिखा है वही है. In fact, Benedict's reagent is used in pathological laboratories. This is used for testing of sugar, glucose present in urine. You know, glucose is an aldehyde. पता है कि नहीं? Glucose जो sugar होता है, that is an aldehyde. Did you all know this? क्या मैम? ग्लूकोज हम जो खाते हैं ना शुगर, यस मैम. वो अल्डिहाइड होता है. और अल्डिहाइड में अगर आप बेनेडिक्स रिएजेंट ऐड करोगे तो क्या आएगा? यू विल गेट अ रेड प्रेसिपिटेट. एम आई राइट? Yes, ma'am. So if glucose is present in the urine sample, what will happen? Will turn red. हाँ, when they add Benedict solution, it will turn red. So that indicates the presence of glucose in the urine sample. And if a person is having glucose in urine sample, means what? Means the person is suffering from Diabetes. Diabetes. yes, diabetes. Okay. मैम बेनेडिक्ट में भी Cu2 प्लस और OH माइनस आएगा. हाँ सेम रिएक्शन है. ओके मैम. तो पैथो लैब्स में यही यूज करते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. Did you finish writing? 1 minute, ma'am. Done? Done मैम. Ma'am, बोलो. so ma'am, you said that if we add Benedict's reagent in sugar, then it will turn. Yeah, it will turn red. This is only with aldehydes, right? Yeah. Again, ketones don't give this test. And one more thing, Fellings and Benedicts, they are used only for aliphatic aldehydes. Aromatic aldehydes don't respond to this test. That also you write down. Fellings test and Benedict's test is given only by aliphatic aldehydes. Aromatic aldehydes cannot be oxidized using these two. So if you want to distinguish between aliphatic and aromatic, you'll go for Fellings test. Fellings or Benedict. Anyone. Yes. But tolerance के साथ दोनों aldehydes react करते हैं. Aliphatic भी react करते हैं, aromatic भी करते हैं. So tolerance reagent cannot be used to distinguish between aliphatic and aromatic aldehydes. Harshita, for which one? Fellings you are saying? Huh, they can go for Fellings also. But citrate salt is easily available. That is why. Citric acid पता है ना? Citric acid बहुत common चीज है. Oranges और इसमें होता है citric acid. Even in lemon. Yeah, lemons. All your citrus fruits have citrate salt. टॉलन का आपने क्या बोला? Tolerance test is given by both aldehydes, aliphatic as well as aromatic. Okay, ma'am. This is also oxidation only now. Bayer vinegar oxidation.
आपका मेंस तो पोस्टपोन होने वाला है ना, वो तो पता है ना कि नहीं? नहीं मैम, जनवरी में तो नहीं होगा, आई डोंट थिंक। मैम बिकॉज मेंस पोस्टपोन होने वाला है। जनवरी, वैसे जनवरी में होता है ना फर्स्ट जो अटेम्प्ट होता है। तो मैम अभी किस में है? Feb अभी में है। तक हैव यू रिसीव्ड द फॉर्म्स टू बी फिल्ड? नो नो मैम। मैम, नहीं हाँ, तो आया। वैसे नवंबर तक सारे फॉर्म्स फिल हो जाते हैं। इस बार तो कुछ आया नहीं है ना इंटीमेशन दैट सेज दैट इट मे बी पोस्टपोन, मे बी फरवरी में जाएगा वो, नॉट श्योर, वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी सर्कुलर। हम 4 अटेम्प्ट होंगे। नहीं देखो, अगर जैन में होता वो तो अक्टूबर में फॉर्म्स आ जाते हैं और फिलिंग हो जाता है पूरा। आप लोगों के फॉर्म्स नहीं आए हैं ना अभी तक मेंस के, नो नो मैम। फॉर्म फिलिंग नहीं हुआ है तो कैसे करेंगे? They हम won't be पर able to- कितने अटेम्प्ट है? कितना? कितने अटेम्प्ट है ये टाइम? दैट ऑल्सो नॉट श्योर, अटेम्प्ट तो उतने ही होंगे, 2 अटेम्प्ट करते हैं ना वैसे। हम 4 था ना लास्ट टाइम। अच्छा हाँ, जैन फेब में होता है और फिर अप्रैल अप्रैल मई में होता है ना कुछ ऐसा है। मेंस पर 2 ही अटेम्प्ट होते हैं ना। नॉट श्योर एक्चुअली, आई डोंट मैम नो। सीईटी कब होता है? हाँ, दिस ईयर हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आई डोंट नो। मैम सीईटी कब होता है? सीईटी मई में होगा, मई एंड में। बोर्ड्स के बाद ना। हाँ हाँ, आराम से बोर्ड्स के बाद, बोर्ड्स और सीईटी में काफी टाइम रहता है बीच मतलब अप्रॉक्स में कितना? में। देखो बोर्ड्स आपके कंप्लीट होंगे अराउंड मई में, मई में बोल रही हूँ, मार्च में, ठीक है। मार्च में जैसे बोर्ड्स हो जाएंगे यू विल हैव योर जेई मेंस। जेई मेंस अप्रैल में होगा और उसके बाद मई में, आई थिंक लास्ट वीक ऑफ मई आता है यहाँ। मैम तो एडवांस पहले होता गूगल है कि फॉर्म में सीईटी फरवरी पहले? लिखा है। फरवरी क्या? आई मीन गूगल फॉर्म में ऊपर फरवरी 2022 लिखा है बोर्ड के लिए। हाँ, it starts in February, but it gets completed somewhere in May only. Okay, because there are many subjects ना, खाली आप लोगों के 6 सब्जेक्ट थोड़ी हैं। कॉमर्स के, आर्ट्स के, सारों के बोर्ड एग्जाम सभी सेम टाइम पर होते हैं ना, तो उनके सब्जेक्ट्स, हाँ आपको भी बीच बीच में छुट्टियां मिलती हैं बोर्ड्स में। तो it starts somewhere in February, but it will stretch till May. मई बोल रही हूँ, सॉरी, मार्च में बोर्ड्स कंप्लीट हो जाएगा, देन अप्रैल यू विल, आई थिंक 15 to 20 days you will get in between to prepare for your mains again. Mains will be somewhere in April, first week of April से या second week of April से शुरू हो जाएगा, and then you have your CET coming up in May. हम एडवांस होएगा पहले कि सीईटी? पहले एडवांस होता है शायद। मैम पर अगर बोर्ड्स फरवरी में हुए तो फिर 4 अटेम्प्ट नहीं होंगे, क्योंकि 4 अटेम्प्ट के लिए अभी पिछले बार फरवरी मार्च अप्रैल में बोला था, पर अप्रैल हाँ, so मई maybe I में। think they'll reduce it to 2. See, actually we have not received any circular from the Rohan, Tollens reagent cannot be used for distinction between aliphatic and aromatic aldehydes. Fine, you've asked me 2 times. हाँ, fine. So till we don't receive any circular, we cannot say. And if it had, if it was to be in January, you should have by now filled up the forms and submitted already. जो हुआ नहीं है अभी तक. Okay. So tentatively January में तो नहीं होना mains. So Bayer vinegar oxidation, let's go for that. Maybe 4 attempts, but then how they are going to manage, we don't know. So till any circular is received, we cannot say anything. फॉर्म फिलिंग आएगा तभी पता पड़ेगा कि फॉर्म फिलिंग का जब सर्कुलर आएगा, only that time we can say कि हाँ ये डेट्स पे हो सकता है. Fine. Now Bayer vinegar oxidation is an oxidation of ketone using any peroxy acid. You can use any peroxy acid here. You can use peroxybenzoic acid also. Or you can also use H2SO5. You know what is H2SO5? Yes, they may extend the CET date also. If JE has 4 attempts, yes.
मैम फिर उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए जो आपका कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह सितंबर के पहले तो नहीं चालू होगा, क्योंकि पूरा वो प्रोसीजर चलेगा ना, ये क्या बोलते हैं, एडमिशन प्रोसेस चलेगा अगले साल के अक्टूबर में मतलब कॉलेजेस अलॉट हो। सितंबर अक्टूबर, यस यू कैन से। वैसे हाँ, अभी 2 साल से तो ऐसे ही हो रहा है, सितंबर अक्टूबर के बाद ही शुरू हो रहे हैं कॉलेजेस। मैम वो H2SO5 है ना? हाँ, H2SO5 क्या होता है? दिस इज परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, also known as Carrot acid. Any of the peroxy acids will oxidize the ketone to ester. Ketone to ester. This oxidation of ketone to ester using peroxy acid is known as Baeyer-Villiger oxidation. Or do you write the reaction? I have to do the mechanism. The peroxy acid will first give H plus. H plus कहाँ पर अटैक करेगा? Can I say oxygen? Yes, ma'am. Give me the formal charge on that. Plus. Plus. So now what will happen? Can I say pi bond will shift? Yes, Yes, ma'am. ma'am. और जैसे ही वो pi bond shift होगा, ये इधर अटैक करेगा. Yes, ma'am. ये समझा? I can put a R dash here ताकि distinguish कर पाओगे आप. Formation of this you all have understood? Yes, ma'am. Now which is the weakest bond in this compound? O bond. Yes. This breaks, this electron pair shifts in here, forming a double bond. This moves here. तो यहाँ पे charge क्या create होगा? Negative. So you'll get R dash C O minus with double bond O, correct? Yes, ma'am. और यहाँ पर क्या बनेगा? O पे charge बताओ. Positive. Positive. Yes. Okay. So now due to this positively charged oxygen, the alkyl group with the electron pair will migrate to the electron deficient oxygen. तो यहाँ पर जैसे ही alkyl migration होगा, कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा? Positive. तो ये क्या करेगा? Double bond. इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. और इस पे चार्ज बताओ क्या होगा? Plus. Negative. माइनस क्या बना ये? Ester. Ester. अब ये H प्लस कहाँ जाएगा? ये H प्लस इसके पास जाएगा, फॉर्मिंग व्हाट? Carboxylic acid. यस. ओके. Yes, Rohan, just give me a few seconds. Let them complete this and I'll show you the previous.
Did you all finish? 1 minute, ma'am. Ananya, I know you all are going बच्चा through lots of anxiety because ये तो COVID ने सब खराब करके रख दिया है. 2 years not going to college, sitting at home and studying is really, I can understand. Okay. College जाते हैं तो वो atmosphere create हो जाता है. In that, like, it becomes easy for you to study and like a competitive सा एक atmosphere हो जाता है. यहाँ पर तो nothing like you're not meeting anyone, not seeing your teachers, not seeing बाहर का कुछ भी, मतलब it's, I can understand the anxiety going on, but then we don't have choice. See, it's with us also the same, because even I have been teaching 26 years. I have been like एक schedule था मेरा, morning में सुबह उठना है, get up at 4:35, get ready, go to the college, go and teach, come back home. तो ये एक schedule जो 26 years का था, वो last 2 years में it is completely. So even we are affected to a very, होता ना? Even we miss college, going to college, meeting students, meeting teachers. So it's a part and parcel, what we have to accept it. Okay. So don't worry, all things will come in place. Just concentrate now, try to concentrate. That's what I can say. Do some meditation in the morning if you can. At least 10 minutes in the morning. It'll help you a lot. Your mind will be relaxed. You'll be able to study the entire day. Okay. So make it a point, I think. See, it'll help you. This is just my guidance to you. If you want, you can go ahead with it. If early morning, if you get up and just do 10 minutes meditation, no? Just sit quietly, doing nothing. Don't think about anything. Your mind has to be completely free from, like, you're not supposed to think about anything. So if that is the way, if you're doing for 10 minutes every day, you'll get that coolness and calmness in your mind. Fine? Just try it out. It'll help you. This mechanism is written down? Yes, ma'am. Okay. Rohan, you wanted the last slide? Okay. Now, if there are two different alkyl groups here, like in an unsymmetrical ketone, क्या होगा? With two different alkyl groups on the ketone. R and R dash. तो अगर R and R dash है यहाँ पर, so which one will migrate to the electron deficient oxygen? The larger alkyl group migrates to the electron deficient oxygen. So just write this point down. In case of unsymmetrical ketones, the larger alkyl group migrates. In case of unsymmetrical ketones, the larger alkyl group migrates to the electron deficient oxygen. So just write down these products now. Ma'am, what is the reason why the larger group migrates?
That is based again on Cram's rule. You're asking, that is why I'm telling you, but actually you don't need to know this. Say you have an unsymmetrical ketone, there's a small alkyl group and a large alkyl group on that, correct? Yes, ma'am. अब इसमें जो peroxy acid है, can I say this peroxy acid is a very bulky group? Yes, ma'am. This attacks the carbonyl carbon from the side where there is a smaller alkyl group. Make sense? Yes, ma'am. So the peroxy acid attacks from this end. तो migration इसका नहीं हो पाएगा, migration इसी का हो पाएगा. Because ये side तो एक sterically hindered molecule है already. ma'am. Yes. ठीक है? तो larger alkyl group migrate. Okay, ma'am. Fine. Ma'am, can you repeat once more? This is an unsymmetrical ketone with a smaller and larger alkyl group. Yeah. The peroxy acid attacks from the side where there is a smaller alkyl group. तो इस side से peroxy acid आता है. तो ये side अभी sterically hindered हो गया, correct? Yeah, ma'am. तो migrate कौन करेगा ऑक्सीजन के पास? Okay. Fine. Okay, ma'am. मैम आप फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर लिखो. ये है. ओके मैम. एसिड प्रोडक्ट नहीं लिखना है. हाँ, एसिड क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड, करेक्ट? यस मैम. Just complete these reactions.
Harshita, I said the larger alkyl group migrates to the electron deficient oxygen. Okay. Did you complete all? Done, ma'am. यहाँ पर क्या बनेगा? O18 कहाँ होगा बताओ? Ester. Did you get this? Yes, ma'am. Did you get this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम बेंजोइक एसिड तो बनेगा ही ना? हाँ हाँ बेंजोइक एसिड. ये आया? Last two did you get? मैम नहीं आया लास्ट. हम रिंग एक्सपेंशन होगा. हाँ मैकेनिज्म बताओ ना. ठीक है. लिख लो नेक्स्ट स्लाइड पे. I'll do the mechanism. Finish writing? Yes, ma'am. So I'll do the last one. लास्ट 2 करो. सेम ही है दोनों का. ओके. तो पहले ये H देगा. यस मैम. इसका प्रोटोनेशन होगा तो चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस. प्लस. Yes, ma'am. पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा. This will go and attack the carbon. यहाँ तक समझा? Yes, ma'am. फिर क्या होगा? ये जो बॉन्ड है पेरोक्साइड बॉन्ड ब्रेक होगा. This will come out as what? Benzoic acid. बेंजोइट आयन. और इस O पे चार्ज क्या आ जाएगा? Positive. उसके बाद क्या होगा? Ring expansion. और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. करेक्ट? ये बॉन्ड ऐसा था. यस मैम. अब Yes, ऐसा हो ma'am. गया. समझा? यस मैम. Yes, ma'am. Did you understand this? Yes, ma'am. Yeah. Now this is a cyclic ester, correct? Yes, ma'am. Esters वैसे बनते कैसे हैं? From which functional groups? Alcohols and carboxylic acid. So can I say this is from the alcoholic part and this is from the carboxylic acid? Yes, ma'am. तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा है, और अल्कोहलिक ग्रुप कौन से कार्बन पे है? डेल्टा. So this is going to be called as a delta lactone. Lactone is a cyclic ester. This is a delta lactone because the alcoholic group lies on the delta carbon.
समझा? Yes, ma'am. जैसे जैसे ये अगर लैक्टोन लूंगी तो इसका नाम क्या होगा? ये गामा लैक्टोन है. Why gamma lactone? It's on the gamma carbon. Gamma carbon. This part is from carboxylic acid. This is from alcohol. कार्बोक्सिलिक एसिड का ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये गामा है. अल्कोहलिक ग्रुप कौन से कार्बन पे है यहाँ पर? तो इट इज अ गामा लैक्टोन. समझा? Yes, ma'am. मैम दूसरे साइड पे स्टार्ट नहीं कर सकते? नहीं 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 नहीं, अल्फा कार्बन वही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में. मेन फंक्शनल ग्रुप ये है. तो इसका नाम क्या होगा? ये तो डेल्टा लैक्टोन है. दिस विल बी डेल्टा मिथाइल डेल्टा लैक्टोन. अंडरस्टूड? क्यों डेल्टा लिखा आपने? क्योंकि लैक्टोन तो डेल्टा है और डेल्टा कार्बन पे मिथाइल भी है. यस मैम. डेल्टा पे मिथाइल भी है और डेल्टा पे लैक्टोन भी है. करेक्ट? यस मैम. Finish writing these names. Yes, ma'am. ये लिख के हो गया है. Yes, ma'am. Can you wait for 1 minute? हाँ. Ma'am, बोलो. so we can conclude that any six, it's like any hexagon shaped ring with that COO group attached. For example, this is lactone, right? Yeah. Lactones with 6-membered rings will be delta. 5-membered rings will be gamma. 4-membered ring क्या होगा? Beta. This will be beta lactone. समझा? Yes, ma'am. मैम लैक्टोन मतलब Cyclic ester. ओके मैम. Could you please show the previous page for a second? Yeah. Done, ma'am. Thank you. Done. Thank you. Okay. This is also done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now give the heading as nucleophilic addition reactions. नहीं, ये सेकंड होगा, थर्ड होगा ना? कितने लेक्चर लगेंगे? एल्डिहाइड कीटोन को और 2 लेक्चर्स जाएंगे. इसमें 28 रिएक्शंस है, नेम रिएक्शंस. Nucleophilic addition reactions. First is addition of HCN. Aldehyde पे पहला अटैक किसका होगा? Nucleophile. Cyanide will attack carbon, correct? Yes. O will get what charge? Negative. So H plus will attack O. Oxygen. And you get the formation of a cyanohydrin. I think I've done this reaction. Yes, ma'am. Yes मैम. In Reaction mechanism. mechanisms, yes. Now, the cyanohydrin, which is prepared, we introduce chirality in the molecule, correct? Yes, Chiral ma'am. carbon आ जाता है. What would be the order of reactivity here between these 3 compounds? This also I have done. Which will react fastest with HCN? First one. Yes. And what is the reason for that? Low plus high. Steric hindrance.
Steric hindrance भी और inductive भी, correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is rate towards nucleophilic addition reactions. So there is increasing plus I and increasing steric hindrance, correct? Yes. So because of these two factors, the rate towards nucleophilic addition decreases in that order. Which will be more reactive? Any aliphatic aldehyde or any aromatic aldehyde? Aliphatic. Yes. And what is the reason for that? Carbon has कार्बन का यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है ना उसको. Yes. Yes, ma'am. तो जब यहाँ से मिलेगा तो इट विल नॉट इजीली एक्सेप्ट फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल. Plus R है ना? हाँ, प्लस आर है ना रिंग का इसमें. Yes, ma'am. So nucleophile will not attack easily, correct? Yes, ma'am. Same way alicyclic or aromatic, Aromatic. which is Alicyclic. Alicyclic. yes, alicyclic is more reactive than aromatic. Ketones are always less reactive than aldehydes, okay? Because ketones में जो plus I effect है वो बहुत ज़्यादा होता है. प्लस आई की वजह से कीटोन में रिएक्शन होगा ही नहीं. किसमें? कीटोन में रिएक्शन होगा ही नहीं है. एरोमेटिक कीटोन्स बहुत ही कम, मतलब बहुत स्लो होता है उनका रिएक्शन. क्योंकि पहले ही एलिफैटिक कीटोन्स में मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक. बिकॉज़ कैन आई से एरोमेटिक कीटोन्स में प्लस है. बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन्स देगा ना कीटोन को. Yes, so this reaction is there for ketones, aliphatic. हाँ, ये तो कीटोन्स के साथ भी देगा बट रिएक्शन स्लो रेट पे होगा. Okay, ma'am. Did you finish writing this? Yes, ma'am. Just 1 minute. Done? Yes, ma'am. Now the second nucleophilic addition you have to do is addition of sodium bisulfite, NaHSO3. I'm writing in general for aldehyde. Same reactions goes for ketones also. Tell me what will happen here. This will attack carbon. Yes, ma'am. Pi bond will flip.
Now here Na will come here because of the electrostatic attraction. Now there would be an IMPA. IMPA क्या होता है? मॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। हाँ तो क्या होगा? हाइड्रोजन SO3H का H माइग्रेट करना कहाँ पर माइग्रेट O करेंगे? पे और ये क्यों होगा? because it is acidic. Very good. Sulfonic acid is a stronger acid than alcohol, correct? यस मैम Yes, तो ये अपना H plus इसको दे देगा, forming the alcohol, and you'll get sodium salt of this. Okay, so this is sodium bisulfite derivative of aldehyde. This is obtained as a precipitate. You get yellow to orange color depending on the R group. Aromatic होते हैं तो orange color में मिलता है. So yellow to orange color precipitate. In fact, this test is used for the identification of carbonyl group. Means what? aldehyde and ketone. To identify कि कोई aldehyde है या ketone है, or to identify, you add sodium bisulfite. If you get a orange to red color precipitate, that shows that the molecule has a carbonyl. Again, but sterically hindered ketones do not give this test. So sterically hindered ketones do not respond to this test. मिस सेकंड लाइन में वो फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? सोडियम बाइसल्फेट Bisulfite derivative of aldehyde. ओके मिस Ma'am, Tell me. ma'am, IMP stands for intramolecular proton elimination. Intramolecular proton exchange. Okay, ma'am. Finished writing this? यस मैम Grignard reagent I'm not going to do because I've done it earlier. What product it will give when Grignard adds to aldehydes and ketones? भूल गए हो? Aldehyde में Grignard ऐड करेंगे तो कहां पर अटैक करेगा Grignard? कार्बन I'm just doing one reaction. O पे charge, नेगेटिव हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? Al- अल्कोहल बनता है ना? यस मैम Yes, ma'am. कौन सा अल्कोहल बना है यहाँ? 2 डिग्री 1 डिग्री चाहिए तो क्या यूज करेंगे? Ketone. Formaldehyde. टोन फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे. फॉर्मेट 3 डिग्री चाहिए तो कौन सा यूज करेंगे? Ketone. कीटोन Ketone. ये सारा मैंने किया है, याद है? यस मैम Yes, ma'am. अल्कोहल्स में भी किया है और रिएक्शन मैकेनिज्म में भी किया है हमने. So I'm not doing this more. Alcohols add to
carbonyl compounds in presence of an acid. They give you this product. Isme, can I say the carbon has alcohol and ether on itself? Yes, ma'am. Same carbon having alcohol and ether is called as a hemiacetal. These hemiacetals can react with more of alcohol to form. This is a geminal diether. Geminal diether मतलब क्या? On same carbon. Same carbon. Ethers on the same carbon. This compound is called as an acetal. So I'll do the mechanism for this. Ma'am, हाँ बोलो. ma'am, by any chance that mechanism to form hemiacetal, is it almost the same as addition, the mechanism used for addition of Yes. In fact, exactly the same. as Grignard reagent, right? हाँ, खाली ग्रिग्नार्ड में पहला अटैक किसका होता है? CH3 माइनस का ना? Yes, ma'am. इसमें अल्कोहल अटैक करता है, बट पहले प्रोटोनेशन होता है. अल्कोहल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होते हैं. कहने से ऑक्सीजन पे सिर्फ डेल्टा माइनस है. Yes, इसमें ma'am. ग्रिग्नार्ड पे माइनस चार्ज है ना कार्बन पे. इसमें ऑक्सीजन पे सिर्फ डेल्टा माइनस है. Yes, ma'am. तो ये जल्दी अटैक नहीं कर पाता है. Because it's a poor nucleophile. तो what we do is first we protonate the aldehyde. Aldehyde को protonate कर लेंगे तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? Positive. pi bond शिफ्ट हो जाएगा और इस पे Yes, चार्ज क्या आ ma'am. जाएगा? Negative. Positive. पॉजिटिव आएगा ना. हाँ मैम. तो जैसे ही यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा ये आके इमीडिएटली अटैक करेगा. समझा? Yes, ma'am. So H plus is catalyzing the process. Catalyzing means what? Helping the process become faster. Yes, very good. So I'm going to do the mechanism. Did you finish writing this? Yes, ma'am. मैम सबका मैकेनिज्म जानना जरूरी है. मैकेनिज्म से समझ में अच्छे से आता है. अब अच्छा. जैसे ये रिएक्शन, ये वाला अगर आपको बगैर मैकेनिज्म पूछा जाएगा, will you be able to give me the product? No ma'am. Got it? Yes ma'am. Did you finish writing this? Yes, ma'am. Just 30 seconds, ma'am, please. Okay. Done, ma'am. Thank you, ma'am. Mechanism, I'll take it on the next slide. In acidic medium, first the aldehyde gets protonated. This develops a positive charge because of which the pi bond shifts and alcohol attacks the carbon. Give me the charge. Negative. नेगेटिव कैसे? Positive. 5 इलेक्ट्रॉन है ना ऑक्सीजन के पास. Yes ma'am. फिर क्या होगा? H प्लस निकल जाएगा. Yes, ma'am. To give you what? Negative charge. नेगेटिव नहीं आएगा ना. ये H प्लस निकलेगा तो ऑक्सीजन को लोन पेयर मिल जाएगा ना. अच्छा हाँ मैम. Okay, so this is what? Hemiacetal formation. Did you understand this? Yes, ma'am. Now hemiacetal to acetal I'm showing it to you. फॉर्मल चार्ज बताओ.
Positive. This will leave out as what? Water. 2O. जैसे ही वाटर निकलेगा कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा? Positive. बट अल्कोहल है अटैक करने के लिए, करेक्ट? Yes, ma'am. यहाँ प्लस है, H प्लस निकलेगा, गिविंग द एसिटिल। मैकेनिज्म समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Did you finish? Yes, ma'am. 1 minute. Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, how many molecules of alcohol are reacting with aldehyde to form acetate? 2. 2. 2. So instead of using 2 molecules of alcohol, what if I use a dihydric alcohol? Dihydric alcohol में दोनों OH group same molecule में होंगे. Yes, ma'am. हाँ, तो give me the structure of the acetyl form here. Did you all get the structure? 1 minute, ma'am. Did you all get this? Yes, ma'am.
What about the others? Got it. You want me to show you the mechanism? Yes, ma'am. Protonation होगा पहले. Understood? Yes or no? Yes. Okay, now reaction of aldehydes and ketones with alcohol is very, very important. In the sense it is used for protection of an aldehyde group or a ketonic group. What do you mean by protection? It is used for the protection of the carbonyl group. Protection मतलब क्या? Being safe. So that it won't react with the carbonyl group, it will rather react with the other group. Yes, the reagents will then not react with this group, but they will react with some other functional group. Okay, this part I'll be doing in details in the next class. Fine. I cannot cover it in 3 minutes. Fine. Yeah, ma'am. So just remind me the next class I have to do this in detail. Protection of the carbon. Fine. Okay, ma'am. So I'll stop here now. And okay, page 13 you want? Ma'am, wait, I'm copying this page. Okay, okay. Complete this first. Done, ma'am. Thank you. This is page 13. Okay. So I'm ending the class then. Bye all of you. Thank you, ma'am. Bye bye. Thank you, man. Yeah, yeah. Bye.